All right, ladies and gentlemen, welcome back once again. And today we are doing our second team analysis, and it is our country, Team India. And we have Aaryan with us once again from the Direct Hit, and we are going to cover up India's team analysis, whose team was announced today at 1:30 p.m. Many confusions, many things, but at the end it was sorted in the press conference. Aaryan, what's your take on the 17-member squad? I'm not going to come on the 18th player, but what's your take on the 17-member squad for Team India? Pritam, thank you and welcome everybody. And this team picked pretty much itself, I think. Not too many surprises for me at least. And few new individuals which we will talk about, but looks, many players coming back. So Ghar Aja Pardesi, that is the feeling, and many players coming back from injury. So that was really, really good. And what do you think about the press conference that happened today? Rohit and Ajit, giving swaggy answers. So it was good to see that it happened. What are your take on the press conference? Yeah, press conference. I think I was like looking into Twitter and started those things, and I was thinking that since the era of Virat Kohli and Ravi Shastri, this is the first time I got all my clear-cut answers in terms of doubts, in terms of confusions. Every question was answered perfectly, and thanks to Rohit and Ajit, both took it professionally. Even they went to a limit of Rishabh Pant's recovery update as well. So it was wonderful for that, and I think we had to take part and parcel of the squad. Somebody will miss, somebody will get a surprise pick, just like Tilak Varma, who was getting the hype in the last 1 month or so. He eventually made the squad. Similarly, Yuzvendra Chahal got missed out. So here and there things will happen, and this is what is the beauty of Team India. Something or the other happens. Yeah, and we got our fast bowling trio, or you can say, quad trio back in Prasidh Krishna, Jasprit Bumrah, Mohammad Siraj, and Mohammad Shami. And talking about Mohammad Shami, he is from Bengal, and we have someone as our guest today who is from Bengal. Well, she is into the broadcasting industry. She is a host. She has been trained under Mr. Majumdar, played state level for many sports, including shot put. And we will introduce her. We have Damini Basu. She is from Kolkata, and we'll introduce her. Hello, Damini. How are you? Hello and namaskar. Thank you so much for having me in this show. Hello, All right, and while what was your reaction? क्या reaction था? 1:30 टी आई. Aaryan, could you repeat what you just said because there are some I'll, lags I'll from your yeah, end. there's some What lag. was your reaction? Aryan, you're still lagging. No worries. I'll Yeah. transfer that to you in our language itself. Tomar Okay. reaction ki chilo in terms of the squad that was announced at 1:30 p.m. नहीं देखिए, स्क्वाड तो बहुत ही बैलेंस्ड है, उसमें कोई दोहराए नहीं है बिल्कुल भी. इट्स अ वेरी बैलेंस्ड स्क्वाड, बट द थिंग इज, आई विल बी अ लिटिल ब्रूटल हियर दैट there's no dearth in talent. There are a lot too many talented players. The pool of talent that we have, in our Indian management, in our Indian bench, is beyond words. They are beyond adjectives, so to speak. But the thing is, I personally feel it's high time each and every player, stands up and takes up the responsibility on equal terms. Like रोहित शर्मा ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेंशन किया था कि इंडिविजुअल्स पे वो दामोदार नहीं हो सकता. एक टीम स्पोर्ट है, तो उस टीम स्पोर्ट में 11 के 11 खिलाड़ियों को बराबरी का हिस्सेदार बनना है, बराबरी का दारोमदार अपने ऊपर लेके स्टेप अप करना है. और रोहित शर्मा का एक और पॉइंट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा. आई थिंक उन्होंने ये शायद पहली बार अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही होगी कि वो ऐसे खिलाड़ियों पे तवज्जो देना चाहते हैं जो बैटिंग करने से शाय अवे ना करे, किसी भी पोजीशन में उनको प्रॉब्लम ना हो बैटिंग करने से. ही डजंट वांट हिज बैटर्स टू बी एक्सट्रीमली कंफर्टेबल in the positions they are used to in batting.
लाइक बहुत ही डायनामिक, बहुत ही ऑलराउंड दर्जे के बैटर्स वो चाहते हैं, जिस प्रकार हम इंग्लैंड के टीम में भी देखते हैं कि लिटरली नंबर 10 तक उनके पास बैटिंग होती है। तो उनके पास, तो उनको मतलब अगर 5 डाउन, 6 डाउन, 7 डाउन बहुत जल्दी हो जाए तो खास मुझे नहीं लगता डर होता है, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास बैटिंग अभी भी बाकी है। तो इस बार की जो स्क्वाड बनी है, आई वुड से कि हाँ ठीक है, अगर हर एक प्लेयर बैटिंग ना कर पाए वैसे, पर यू नो द क्वालिटी, जो बैटिंग डिपार्टमेंट है, दैट हैज सम एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड क्वालिटी प्लेयर्स, सो टू स्पीक। फिर आप अपने ऑप्शंस काफी अच्छे रख रहे हो, आप अपने बैकअप प्लेयर्स काफी अच्छे रख रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, द गुड थिंग इज दैट इंजरी प्रोन प्लेयर्स आर बैक। जो प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड थे वो वापस आ गए हैं, सो ऑप्शंस काफी खुल गए हैं, एंड लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। Yeah, yeah, and looking at the squad, plenty of batsmen in the squad back. But Damini, if I ask you about our vice captain Hardik Pandya, he has retained the vice captaincy. खबर आ रही थी कि जसप्रीत बुमराह बन जाएंगे, पर वो तो नहीं हुआ. So how important a role is he playing in this team? तो देयर इज नो डाउट अबाउट इट, हार्दिक पांड्या पे बहुत विचार विमर्श हो चुके हैं, और बताओ, मैंने खुद भी अपने काफी सारे दूसरे शोज में भी काफी बार मैं ये कह चुकी हूँ कि हार्दिक पांड्या बतौर ऑलराउंडर तो इंडिया के लिए एक बिल्कुल ही एस्टैब्लिश्ड प्लेयर है, क्योंकि काफी वर्षों से, जब से उन्होंने अपना डेब्यू किया है, काफी आईसीसी इवेंट्स में भी हम ये देख चुके हैं कि वो कितनी खूबसूरती से अपने आप को साबित कर चुके हैं, बतौर बल्लेबाज, बतौर गेंदबाज, क्रंच सिचुएशंस में आके इंडियन टीम के बैटिंग को संभालना, बॉलिंग से ऑपोजिशन के बैटिंग लाइनअप को रैटल करना। तो इन दोनों डिपार्टमेंट्स को वो बहुत खूबसूरती से बैलेंस कर पा रहे हैं, और अब तो उन्होंने अपना एक तीसरा जॉनरा भी खोल दिया है, वो है कैप्टेंसी, कि उन्होंने ये भी दिखा दिया है कि उनको कैप्टेंसी भी आती है। तो मुझे लगता है कि ओवर द इयर्स जिस प्रकार वो अपने आप को ग्रूम कर पा रहे हैं ना, बोथ फिजिकली एंड मेंटली, आई थिंक दैट्स अ वेरी positive and energetical vibe that he is portraying from his point, and he is somebody who can be looked up by upcoming cricketers. And he also, I would say, he is also somebody on whom I think the entire Indian management, not just the players but the entire management, can just blindly rely on, क्योंकि मुझे लगता है मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरह से पता है कि उनके पास हार्दिक पांड्या जैसा एक ऐसा खिलाड़ी है, आप उससे कैप्टेंसी करवा लो, आप उससे स्ट्रैटेजी मेकिंग करवा लो, बॉलिंग करवा लो, फील्डिंग करवा लो, उस बंदे को सब कुछ आता है, ठीक है ना। तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मतलब उनके टीम में रहना या ना रहना कैन नॉट, आई वुड से एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बी अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, बिकॉज ही इज सच अ वाइटल कॉग इन द इंडियन टीम राइट नाउ। Absolutely, absolutely agreed to this point. Just because we need such all rounders, we were missing all rounders, and I'll come to the point where you were mentioning about Rohit Sharma speaking in the press conference, and we know it's been frustrating to see that our batsmen cannot bowl. 2011 का टीम आप देख लो तो you have Suresh Raina, you have Yuvraj Singh who can bowl, but this team cannot. This players like Shubman Gill, Shreyas Iyer, they cannot bowl. We have recently seen Tilak Verma bowling a few overs. But coming into the point of my question being Prasidh Krishna's inclusion, do you think there was something harsh being done by what Mukesh Kumar had in the West Indies tour? He played all the three formats, he made his debut. Prasidh Krishna coming back from an injury straight into the Asia Cup squad, potentially part of the World Cup squad as well. Do you think he should have looked, the Team India should have looked into Mukesh Kumar, or is this the right pick of going to Prasidh Krishna being the extra pacer and having extra pace, which favors his height as well? Is this for me? Yeah, for you. Okay. Thank you, Pritam. Prasidh Krishna, he is another player because मैं एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात कह सकती हूँ कि काफी वर्षों से, और ये इसलिए नहीं है कि मैं बंगाल से हूँ या केकेआर की बहुत बड़ी फैन हूँ, पर प्रसिद्ध कृष्णा काफी वर्षों से वो केकेआर के बॉलर रहे थे, और मैं
केकेआर के मैनेजमेंट के कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कभी देखती थी, और जब मैं बहुत क्लोजली केकेआर को लाइक कवर करती थी, उनके मैचेस कवर कवर करती थी, तो लाइक कुछ बहुत ही इंटरनल कुछ बातें भी होती थी कि प्रसिद्ध कृष्णा लाइक टैलेंट स्पॉटर्स ने उनमें वो उम्फ देखा था, कि उनमें वो जज्बा है। बहुत ही कम उम्र में वो नेशनल सर्किट में लाए गए थे, और डोमेस्टिक सर्किट में तो वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पा रहे थे। सो द टैलेंट स्पॉटर्स इन केकेआर फेल्ट कि इनको ग्रूम किया जा सकता है, बट अगेन द ऑक्शंस हैपेंड एंड देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड, एंड अनफॉर्चुनेटली प्रसिद्ध कृष्णा हैड टू बी लेट गो ऑफ, और राजस्थान मेड द मोस्ट ऑफ इट, राजस्थान रॉयल्स। एंड हम सब ने देखा कि प्रसिद्ध कृष्णा कितने बढ़िया तरीके से राजस्थान रॉयल्स के लिए अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे थे। एंड ऑफ कोर्स cut to the time now, he's the part of the Indian team and he is really bowling so well. Abhi the thing is, I would say that he's climbing up the ladder gradually. बहुत fast transition हुआ नहीं है. He's climbing up, but he's climbing up. That's the good point. Up and gradually. And number two, of course, kabhi kabhi aisa bhi ho jata है, every bowler, not just him, every bowler might get hit bad by opposition batters. Not every bowler can have his day, or Prasidh is still learning. He's still trying to grasp the crunch situations and the tense moments in every match. So I think it's only a matter of time. He just needs to be given those opportunities, those times. And, most importantly, Prasidh comes under the category of pace bowlers. And मैंने हमेशा से, हाँ डेफिनेटली आई एडमायर स्पिनर्स अ लॉट, और हम जानते हैं कि एशियन टीम्स आर मोर स्पिन फ्रेंडली। इंडिया की स्पिन ज्यादा उनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बट आई पर्सनली एडमायर फास्ट बॉलिंग अ लॉट। तो पेसर्स को आप बिकॉज कंट्रीज टीम्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, लाइक इंग्लैंड, इन टीम्स की ताकत, खास तौर पे ऑस्ट्रेलियन की टीम्स की ताकत है पेस बॉलिंग। So you need, those equal amounts of counterparts. And I think प्रसिद्ध कृष्णा पे वो टैलेंट है, और उनको अगर ग्रूम किया जा सका है तो उनको उस लेवल, उस दर्जे का पेस बॉलर तो जरूर बनाया जा सकता है। बिल्कुल। एंड आई थिंक यू टॉक्ड अबाउट पेस बॉलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और बट वी आर प्लेइंग इन श्रीलंका एंड दैट इज समथिंग वी नीड टू कीप इन माइंड। और हमारे पास आइडियली प्लेइंग 11 में सिर्फ प्लेइंग 11 पे आएंगे, बट दो स्पिनर है जो दोस आर लुकिंग लाइक दे आर गोइंग टू प्ले, जडेजा and Kuldeep, and we have just an Akshar Patel. So do you think we lack? We are very thin on spin department. एक रिस्ट स्पिनर लेके जा रहे हैं, फिंगर स्पिनर ड्यू से मुश्किल होगी, फिंगर स्पिनर्स को मार भी पड़ती है, even though they are left arm. So you think India is a bit thin on spin variety? To be precise with the question. I would say कि हाँ ऑफ कोर्स आपको हमेशा कभी कभी सिलेक्शंस दिमाग में ये रख के भी करनी चाहिए कि आप कहाँ खेलने जा रहे हो, कौन से स्टेडियम में, वहाँ की पिच कंडीशंस कैसी हो सकती है, वेदर कंडीशंस कैसी हो सकती है, आपको वो कैसे फेवर कर सकती है। जैसे मैंने एक बार फिर से जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से जिक्र कर रही हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस, ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स बड़े हैं तो पिचेस काफी ग्रीन है, तो वहाँ पे पेस बॉलिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है, पर एशियन रीजन्स आर मोर स्पिन फ्रेंडली। तो अब मैनेजमेंट, इंडिया की मैनेजमेंट क्या सोच रही थी, उनके थॉट प्रोसेस पे आई एम नोबडी टू कमेंट, वो इट्स अ कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल मैटर विद इन देम। पर मुझे लगता है कि they could have probably opted for another spin option. I would say Kuldeep Yadav तो definitely हमारे Chinaman bowler रहे हैं। अक्षर पटेल has been extremely fruitful for us टेस्ट क्रिकेट में, तो उन्होंने अपना जलवा दिखाया ही है, और एक बहुत ही क्वालिटी ऑलराउंडर के तौर पे इंडिया उनको यूज कर सकती है, क्योंकि बैटिंग बहुत बढ़िया जानते हैं वो। लाइक नंबर 5 पे, नंबर 6 पे अगर उनको भेजा जाए, लाइक एक सिचुएशन अगर ऐसा आता है, आपने जिक्र किया जडेजा का, रविंद्र जडेजा भी एक बहुत ही बढ़िया दर्जे के ऑलराउंडर है। तो जस्ट फर्ज कीजिए कि बैटिंग की सिचुएशन ऐसी है या बॉलिंग की सिचुएशन ऐसी है जहां पे इंडियन टीम बहुत स्ट्रैटेजिकली जडेजा और अक्सर को
एक राउंड रॉबिन फॉर्मेट में यूज कर रही है या ऑल्टरनेटिव ओवर्स में यूज कर रही है, तो आप समझ सकते हैं। और हम सब जानते हैं कि जडेजा के पास वो एक स्पेशल टैलेंट है कि वो किस प्रकार से वो वेब्स को स्पिन कर सकते हैं। ही इज ऑलवेज थिंकिंग। एंड ऑफ कोर्स कुलदीप यादव भी बीच में है, लाइक हाउ कैन we not remember that excellent delivery back in the 2019 World Cup India Pakistan, बाबर आजम को जो उन्होंने dismiss की थी, like ball of the tournament, it didn't take a second for the experts, like पाकिस्तान का एक बैटर आउट हुआ है and the yesteryear legends in Wasim Akram couldn't hold on to their excitement कि क्या डिलीवरी थी वो कुलदीप यादव द्वारा। तो there is no dearth in the talent, but yeah, coming back to the question, I think एक और probably backup के तौर पे एक spin option रख सकते थे, probably युजवेंद्र चहल maybe. अब चलो, that's a different topic of discussion altogether, but well, let's respect the decision taken by the Indian management. Correct, and I couldn't agree more to the point where you were saying about these things. Bapu, he has been so successful with the bat, and similarly, where Rohit Sharma has said that we want each and every players to have flexibility, and flexibility ke तौरान if there is a left arm spinner coming, I don't know, I still don't believe to this point that left arm off spinners cannot bowl to left arm batsmen, but still in case that is the situation, we can send the people like Bapu up the order to counter attack those cricketers. But yes, even I agree to the point is Chahal missing out is a bit harsh, but that is a different ball game, different topic. Similarly, Shardul Thakur, another batting all-rounder. If we have flat tracks, do you think we will play three seamers or will we go for a number eight in an all-round in terms of Akshar Patel or Shardul Thakur? I think that is going to be a very difficult strategy, Pritam, because I think these moves, these cannot be like preempted or pre-assumed. Anticipation इतना ज़्यादा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं कि होना नहीं चाहिए, पर नहीं हो सकता, बिकॉज मैच टू मैच वैरी करता है। हाँ, डेफिनेटली स्पिन डोमिनेंट ज्यादा होगा, पर मैच के टाइम पे, जैसे फर्ज कीजिए अभी एक इंडिया पाकिस्तान, मैं सबसे सबसे पॉपुलर मैच की ही जिक्र करूंगी कि एक इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और से बोथ टीम्स आर गोइंग नेक टू नेक अगेंस्ट ईच अदर। तो एक ऐसा पॉइंट आता है वेयर अनफॉर्चुनेटली वी आर सीइंग कि इंडिया इज ऑन द बैक फुट। तो उस टाइम पे जैसा आपने जिक्र किया कि एक शार्दुल ठाकुर या एक रविंद्र जडेजा या एक अक्षर पटेल, ये तीनों, या एक हार्दिक पांड्या, ऑल द 4 ऑलराउंडर्स दैट वी हैव, इन चारों पे ना वो मेंटल प्रेशर आई थिंक थोड़ा ज्यादा आ सकता है, बिकॉज दे नो कि उनको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली मे बी देयर टीम्स मोमेंटम हैज गॉट डिसबैलेंस्ड बिकॉज द ऑपोजिशन इज गेटिंग अ बिट मोर हार्डर ऑन देम। और रही बात वो 8th नंबर की, वो ऑप्शन तो हमेशा ही खुला ही रहना चाहिए, पर आई पर्सनली फील दैट as Rohit Sharma, quoting Rohit Sharma, what he just said or what he expressed in the press conference is that if instead of pressurizing on one particular department, let's have all the 3 or rather 4 departments: the batting, the bowling, the fielding, and the all-round skills. I would put that in a department as well, कि इन चारों डिपार्टमेंट को हम इक्वली 25% into 4 अगर हम करें, so I think those will produce better results rather than if we are having कि all-rounder 75% आगे करे और बाकी का 50% डिवाइड हो जा रहा है into 3, then I don't think that will provide the better results. And it's high time, I personally say, though I again say that I'm a huge fan of our Indian team, I respect them a lot, but it's high time. Since I'm a true fan of the Indian team, I would say it's high time the Indian team stood up, because it's been a decade long period, and for the past 2 years we are seeing that the Indian team is struggling a bit more, like literally from the group stage as well. So it doesn't justify the amount of talent or the amount or the kind of rankings which Team India holds on the international forum. So that's about it.
Because yes, I agree to this point. Not just in the past 2 years, yes, we've been struggling in the group stages. Bilateral series wins doesn't justify what you are. You can be number one rank in the ICC, but you have to win ICC tournaments, which exactly what England, Australia. That's the reason why they are known as world champions. Similarly, coming on to the next slide, that is our top six players we have picked as Indians, and I'm sure you will also pick these six names that's coming in front of you. I'll come to many players later on. My three players, Aryan's three players. But the first player, not the captain, not the vice captain, full attention, King Kohli. How do you think his role will be not just in the Asia Cup but also in the World Cup? I'm not asking you as an Indian fan about how many centuries we're expecting. Hopefully, every single game we expect a century. But how much of a bigger role he has at number three positions? Looking into that India struggles at the top of the order. You're talking about the high voltage game, India Pakistan, Shaheen Shafri, troubling us in the first over. He is very good in that. Bigger role for Virat Kohli in terms of India's success this year at home. Oh, isn't Virat Kohli just the name more than enough for anybody to, understand what that really means? Just the name. I wish And come on. I wish I could do that. I Oh, I think we could do that because can we not I don't think we can just exclude the fact that there was that long patch where Virat Kohli was struggling and he was struggling bad, and then suddenly he decides to stay away from the game for a period of as long as 30 days, and then when he returns with a bang. Like the that match against Pakistan in that T20 World Cup, can we not appreciate that he literally just portrayed that that's the Virat Kohli we all know. From a point where we Indian fans had just given up all hopes, suddenly Virat Kohli just comes up and he changes gears, and suddenly the Pakistan bowlers are desperately searching for answers. it That was just a shifting innings, of gear even the when hitting Shaheen Shafri the over mid on over the top in that getting exactly, out of leg stump. exactly, That was the shifting of gears. exactly. Yes, absolutely. There's no doubt about it. But now let's go back 2 years to 2021. That unfortunate for Indian fans, that match where unfortunately for India, but fortunate for Pakistan, where they broke that jinx, and in what fashion? By 10 wickets to beat India, where they announced themselves. And but not just the 2021 World Cup. Let's go back to the 2017 Champions Trophy final. I think from there, that top three problem started for India, and it was quite surprising to see like somebody like a Virat Kohli struggling at the top three position, where number three is literally him. Like number three is synonymous with Virat Kohli, and he is struggling in that position was something very, I would say, painful for us Indian Yeah. cricket fans. And in ICC events, it had become like a frequency. Even that 2019 semi-final against New Zealand, remember that start? Virat Kohli getting dismissed, and there was pin drop silence. That perhaps that's the end. But okay, fast forward to the present times. Let bygones be bygones. We do not have, and we cannot look beyond Virat Kohli, because how can we just forget his contributions when it has been his days, when he has clicked, when he has given Yeah. those nightmares to the opposition bowlers? So, Yeah. and Virat Kohli is currently in the form of his life. His records speak, and his records don't speak. I think his records shout, his records yell. Such scary are his records, very attractively scary, we would say. Yeah. So even here, if we look at this slide, just look at how Virat Kohli is just dominating as compared to the others. Just take a look at the number of matches he's played, as and the compared the number of runs that he scored. So he's just somebody beyond adjectives, and he's somebody we cannot by no means look beyond. Virat Kohli will definitely have to take up
that responsibility, that onus will be on him, because number 3 is a hugely important position. Of course, the openers have the responsibility in them to give that start and to stitch that first lengthy partnership, so that the remaining batters get a solid platform to capitalize on. And unfortunately, Yeah, the what is the job of the number 3 batter? That unfortunately, if the openers fail, so the number 3 has to come out and do the opener's job, and that is what Virat yeah. Kohli's job has been on numerous occasions. So he will be a very, very vital player for India, for the Asia Cup, and of course the World Cup. Yeah, agreed. And Virat, obviously, naam bhi Virat, kaam bhi Virat, or he will be the cog. But we're talking about captain, vice captain, दोनों के नाम यहाँ पे हैं. मैं स्टैट्स पे नहीं जाऊंगा. ऑब्वियसली स्किल वाइज तो रोल होगा ही. डिसीजन मेकिंग को कैसे देख रहे हो आप? मुंबई इंडियंस के दोस्त बहुत खेले एक दूसरे के साथ. राहुल द्रविड़, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा. Throw some light on what kind of decisions can we expect from this trio, regards to team they pick, regards to strategies they make. What kind of decision making you see going forward, Asia Cup and World Cup? देखिए, अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, आप लोगों ने सुनी होगी, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ. Too many captains, too many captains from the same region. No doubts about that. But Damini, you know, you're talking to a Punjab Kings fan. We've had 14 of them, so yeah, I agree. I agree. touche. But no, on a serious note, jokes apart, I don't think this proverb would be or can be applicable here, because all these 3 players are first of all placed at 3 different junctures. Rahul Dravid is a veteran. Rohit Sharma and Hardik Pandya are current players. And, all these 3 people, I would say Rahul Dravid is like a treasure trove of experience, be it captaincy, be it experience from his playing days. And all of us know, like, he's second to none when it comes to talent or his records. Rohit Sharma and Hardik Pandya in current times are the leaders in world cricket, one of the leaders in the true sense of the term. But I would say, all these 3 can, present a lot on the table. Their ideas aren't going to clash, because all these 3 people have a lot of mutual respect for each other, each and every Hardik Pandya, Rohit Sharma, and Rahul Dravid. Because you know, of course, Rohit Sharma as a captain, Hardik Pandya has expressed himself as a captain, but Aaryan and Pritam, I think we 3 can relate with each other, because Rahul Dravid was the player from our childhood. I Correct. think we've grown up seeing that man. So kids of today's generation won't know what kind of a captain or what kind of a player Rahul Dravid was. We know. So now, people watching, our viewers watching, they might be wondering, Rahul Dravid तो पिछले जमाने के हैं, उनको क्या पता होगा आज के जमाने का? वो हमें, मुझे, आपको और प्रीतम को पता होगा कि किस दर्जे के वो खिलाड़ी हैं, और वो उनमें किस लेवल की तहजीब है, कि वो मेच्योरिटी है, कि वो अपने आने वाले जनरेशन को रिस्पेक्ट देना जानते हैं, उनके ओपिनियंस को रिस्पेक्ट देना जानते हैं, और उसमें जेल करके अपने एक्सपीरियंस, अपने तजुर्बे को, अपने थॉट प्रोसेस को यूज करके ही नोज हाउ टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ हिज प्लेयर्स, make those quality strategies which eventually can help Team India to always succeed, especially in crunch situations. And राहुल द्रविड़ के strategy making इस प्रकार होगी. Of course, after all, it will be Rohit Sharma who will have to do most of the job. It will be at times probably Hardik Pandya who will have to do a lot of the job. But इन दोनों में भी वो रिस्पेक्ट है, कि वो राहुल द्रविड़, वो कहेंगे कि उनके बड़े हैं, बड़े की बात सुने, उनके एक्सपीरियंस से यूज करे चीजों को, और उसको अप्लाई करे. सो आई डोंट थिंक इन दिस केस द टू मेनी कुक्स वुड बी स्पॉइलिंग द ब्रॉथ. आई वुड से देयर वुड बी अ लॉट ऑफ क्वालिटी सुपरविजन,
a lot of ideas not clashing, a lot of ideas getting amalgamated to ultimately have a beautiful and quality strategy which will effectively help Team India succeed. Correct. And before I go on to my next question, as you've spoken a lot about Rahul Dravid, Hardik Pandya, Rohit Sharma, here's a personal question, one word answer for you, to you. That is, at this stage, would you want Ravi Shastri back as the coach, or would you take away Rahul Dravid and continue for the Asia Cup and World Cup? Tough question. I need an answer. You can't expect me to answer this in one word. It's a very tough question. uh, well, no, I honestly, प्रीतम, मैं इस सवाल का जवाब एक शब्द में नहीं दे सकती, बयां हो ही नहीं सकता, ये बेबुनियाद सवाल है But okay, क्योंकि okay, रवि I'll make it शास्त्री. easier for you. I'm sorry to interrupt, but I'll make it easier for you. The captain will remain as Rohit Sharma, not as Virat Kohli. So it's easier for you. Rohit Sharma, the captain, Ravi Shastri or Rahul Dravid as the coach going forward in the Asia Cup and Cricket World Cup. It's a tough situation, but probably no. I would, if Rohit Sharma is the captain, I would want to continue with Rahul Dravid. Okay, thank you. So I would go next to my two players, and as Mumbai Indians ke charcha raha, an ex-Mumbai Indians player, a current Mumbai Indians captain, why not bring another Mumbai Indians player, Jasprit Bumrah, return from injury. First that, then I'll come to Kuldeep Yadav. Jasprit Bumrah's return from injury as a captain, as a leader, going into the Island series, looked good in rhythm. I'm not going to judge his top class bowling against an below ranked side of Ireland, but not underestimating them much. But still, he looked good. He had controlled in his pace, line, and length. Straight away giving him the new ball in the Asia Cup, or do you think he's going to get something double pivot, getting some responsibilities up there, or do you think he's going to lead the attack of the Indian seamers ahead of the three pacers we have in the squad? No, absolutely. I am here. Is just a one short answer. He will definitely be leading the pace attack because Jasprit Bumrah's absence from Team India had that huge lag in India's pace department. And like I said earlier, also I will be highlighting it again that I am a huge fan of pace bowling, and in ICC events you've got to have your pace bowling attack at absolutely at the top, because you have to face teams like Australia and England. And you need to have your pace department absolutely strong. And who better than Jasprit Bumrah? Of course, he has his compatriots in Mohammad Shami and Mohammad Siraj and Prasidh Krishna. But I guess, of course, not taking away the credit, not demeaning the talent or limiting the talent in what the other three have. But I would also say, I would feel, even the other three would agree that it's a no brainer that it is Jasprit Bumrah who would definitely be leading the pace attack for India. Even the recent Ireland series, like how did Jasprit Bumrah announce his return? Like just the second First over two delivery, and he wickets. was absolutely just the second delivery, and he announced his arrival in style. So it's a no brainer actually. Okay. And coming into my next player, that is Kuldeep Yadav, Chinaman. We are missing, and we have not picked an off spinner. Coming into a question that is coming from a fan in the comment section. He says that according to me, Ashwin ki wapsi has been overlooked. He thinks that Ashwin should have been looked into that fact. But still, do you think first things first is that Chahal has not been picked. So Kuldeep being the lone spinner, I'm not coming into Jadeja. Kuldeep being the lone spinner, he has a bigger role. But not picking an off spinner, right arm off spinner. Do you think how big a role will Kuldeep's 10 overs be in the middle stages, around the 20 to 40 overs mark? It's going to be huge. It is going to be huge because as the question also comes, and also as stated कि अभी थोड़ी देर पहले भी आर्यन ने जैसे पूछा था कि स्पिनर्स में थोड़ी सी कमी कर दी क्या इंडियन मैनेजमेंट ने, क्या एक आध और प्लेयर्स को भी लेना चाहिए थे, एक आध और स्पिनर्स को भी लेना चाहिए था कि नहीं. तो मैंने जिक्र किया था युजवेंद्र चहल का.
और हाँ, देखिए रविचंद्रन अश्विन भी एक और, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट स्पिनर्स, क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, क्योंकि आई पर्सनली फील कि रविचंद्रन अश्विन बतौर खिलाड़ी, एंड he has that brain of a fox. I call him a fox क्योंकि इतने शातिर तरीके से वो जो he comes up with those strategies. He's always thinking, the brain of a scientist. So that's priceless, and it has been proven priceless and precious for India on numerous occasions. वो तो हमने देख ली है. हाँ, अब कुलदीप की बात करते हैं कि दुर्भाग्य है कि ना ही युजवेंद्र और ना ही अश्विन इस स्क्वाड का हिस्सा है, तो स्पिन डिपार्टमेंट का काफी दारमोदार कुलदीप यादव पे तो बिल्कुल आता है, और उनके 10 ओवर्स विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट. एंड हियर आई वुड से कि कुलदीप यादव पे अब वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो अपने अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपने 10 ओवर्स को कितने स्ट्रैटेजिकली यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने एक फिक्स्ड टेम्पलेट, बिकॉज ही विल हैव टू कीप इन माइंड दैट ही डजंट हैव स्पिन ट्विन विथ हिम. Yes, definitely a Jadeja और an Akshar Patel, but एक spin twin उनके पास शायद नहीं होगा इस आने वाले टूर्नामेंट में. तो वो अपने 10 ओवर्स को किस प्रकार डिवाइड करते हैं, किस प्रकार स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहूंगी कि यहाँ पे फिर कैप्टन पे, टीम के कैप्टन पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो कुलदीप यादव का किस प्रकार यूज करेंगे, क्योंकि एक चाइना मैन बॉलर आई थिंक इज वेरी रेयर इन वर्ल्ड क्रिकेट, सो टू स्पीक, एंड वी आर लकी दैट वी हैव, yes, and I feel that we are very lucky that we have Kuldeep Yadav, and he should be put to use, and he should be put to quality use. या और कुलदीप पे तो बात हो गई, ही इज इम्प्रूव्ड अ लॉट. पर अब बात करते हैं रॉयल अफगान रॉकस्टार. आप बोलोगे ऐसा तो कोई प्लेयर ही नहीं है, और ये सारे नाम एक प्लेयर की तरफ इशारा कर रहे हैं, रविंद्र जडेजा. जब ये नहीं होता तो इंडियन फैंस की सांस सूख जाती है, और सारे मतलब जैसे डेजर्ट में बारिश की वेट होती है, वैसे ही इनकी वेट होती है कि भैया कब आओगे. जैसे जसप्रीत बुमराह के साथ हुआ था, दामिनी, ये बंदा इस टीम को कितना बैलेंस प्रोवाइड करता है. और आप अगर एक दो शब्दों में या एक सेंटेंस में इस बंदे की इंपॉर्टेंस बयां करें कि हम फैंस के इमोशंस के साथ ये कैसे खेलते हैं, if he is not there, what kind of a glue he is to this team. Just describe the importance of this man for the fans, for the team to do well. देखिए, he has been knighted by the man himself, महेंद्र सिंह धोनी ने तो उनको एक नाइटहुड दे के रखी है. So I think that is, more than enough for everybody to know that what Ravindra Jadeja is capable of. That perfect all-rounder, बैटिंग, बॉलिंग, आप बस जिक्र कीजिए और वो कहेंगे हाँ मैं करके आता हूँ काम. इतना कि महेंद्र सिंह धोनी तक उनको एक नाइटहुड देने से चूक नहीं पा रहे हैं. तो he is that perfect all-rounder any team would just want in their sides. और yesteryear legends की भी आप कमेंट्स हमेशा पढ़े कि जडेजा के बारे में वो हमेशा कितने प्रशंसाजनक रहे हैं. Agreed. And yeah, these were the top 6 players. पर अब हम चलते हैं. Just a good thing for India is कि हमें एक ही कंट्री में रहना है. We're only playing in Sri Lanka. But I know which match you are most excited by. I won't ask that question. It is obviously India Pakistan. But how do you see other teams challenging India, and Sri Lankan conditions में how do you think we'll fare, because we are playing in Pallekele, दोपहर के मैच है. और वर्कलोड मैनेजमेंट कैसे देख रहे हैं आप प्लेयर्स की? एक तो ग्राउंड्स पे सवाल है मेरा, श्रीलंकन कंडीशंस, और दूसरा वर्कलोड मैनेजमेंट. क्या सारे फास्ट बॉलर सारे मैच खेलेंगे या नहीं? व्हाट डू यू थिंक? देखिए, वर्कलोड मैनेजमेंट मेरे विचार में ये इंडियन मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा. ये दायित्व बोध अगर वो अपने ऊपर ला सके, और सिर्फ उन पे भी नहीं, ये प्लेयर्स पे भी ये जिम्मा आता है कि वो किस प्रकार अपने
रोजी रोटी जिसे हम कहते हैं, रोजी रोटी के जरिए को किस प्रकार वो मैनेज कर पाए, किस प्रकार वो अपने मेंटल हेल्थ को खुद अपने कंट्रोल में रख के अपने आप को हमेशा फिजिकली और मेंटली प्रेजेंट रख पाए, फिट रख पाए कि उनको जाके इंडियन टीम के लिए डिलीवर करना है, दैट इज कंप्लीटली समथिंग विच इज डिपेंडेंट ऑन द प्लेयर्स। पर हाँ, अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि शेड्यूल शेड्यूल तो बहुत बढ़िया लग रहा है, एकदम क्वालिटी गैप भी दिया गया है। ऑफ कोर्स दैट मच एंटिसिपेटेड मैच इंडिया पाकिस्तान, दैट्स आई थिंक गोइंग टू बी अ पॉट बॉयलर, नो डाउट, द परफेक्ट बॉटल ओपनर एवरी fan would love to witness. But that doesn't mean कि बाकी teams won't come hard at India. हमने in coming times and recent times में भी हमने देखा है कि apparently the underdog teams, quote unquote underdog teams, जो काफी वर्षों से जिन teams को ये tag हम सब ने दे के रखा है, वो teams भी कितने बड़े बड़े upsets कॉज कर रही है आईसीसी इवेंट्स में। हमने देखा है ऐसा। क्या हमने कभी सोचा था कि एक वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में अफगानिस्तान जैसी टीम ऑस्ट्रेलिया को हराई नहीं, ऑस्ट्रेलिया जीती थी, सिर्फ 2 रन से जीती थी। क्या हमने ऐसा कभी सोचा था कि अफगानिस्तान इतना टफ फाइट दे पाएगी ऑस्ट्रेलिया को? नहीं सोचा था। क्या हमने कभी सोचा था कि नेपाल, हम लोगों को शायद पता भी नहीं होगा किसी जमाने में कि क्या नेपाल भी क्रिकेट खेलती है, तो वो उस नेपाल को आज एशिया कप में स्टेटस मिल रहा है। सो दैट मीन्स दीज टीम्स आर कमिंग अप, दीज टीम्स आर प्रूविंग देमसेल्व्स। और क्या हमने सोचा था कि पिछला एशिया कप चैंपियंस कौन थी? श्रीलंका। हमने कभी सोचा था कि श्रीलंका चैंपियन बन जाएगी? कि कैसे हालातों में चैंपियंस बनी थी श्रीलंका, जहां पे इतना मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस उनका चल रहा था, उसके बैकड्रॉप में श्रीलंका आती है एक टूर्नामेंट में खेलने। एंड माइंड यू, आई डोंट नो वेदर एवरीबडी नोज इट और नॉट, बट ट्रू क्रिकेट फैंस वुड नो दैट श्रीलंका वर ऑलमोस्ट रिटन ऑफ, क्योंकि टूर्नामेंट फेवरेट्स सबसे पहले इंडिया और उसके बाद पाकिस्तान पकड़े गए थे, श्रीलंका का कहीं जिक्र नहीं हो रहा था। Okay, and then what happens, I as a true fan, I will not be biased here. I will very proudly say that Sri Lanka played very very quality cricket in the Brilliant. previous Asia Cup. Yes. They proved themselves. वो फाइनल में जहां पे एक मौकाम आया था, श्रीलंका पाकिस्तान का फाइनल, एक पॉइंट आ गया था कि लिटरली श्रीलंका फैंस ने भी शायद कह दिया होगा कि अब ये मैच देख के फायदा ही नहीं है, कि पाकिस्तान इज जस्ट वॉकिंग अवे। सडनली श्रीलंका डिसाइड्स कि नहीं, अब तो हमें गियर चेंज करना है, हमको जीतना है। दे कम अप विद दैट परफॉर्मेंस एंड वी आर लाइक जॉ ड्रॉपिंग, मतलब जबड़ा खुलते खुलते कहां तक जमीन पे जाके गिर जा रही है श्रीलंका का जज्बा देख के। एंड दे एंड अप विनिंग, दे आर नाउ द डिफेंडिंग चैंपियंस। और भैया इस बार तो होगा श्रीलंका में, तो मतलब बेवकूफी होगी अगर हमने श्रीलंका को नजरअंदाज करने की जुर्रत तक की तो, ठीक है ना। सो एज रोहित शर्मा वेरी करेक्टली सेड कि गलती से भी, मतलब, और वो खुद भी वो टैग्स पे विश्वास नहीं करते, बिकॉज अगर एक टूर्नामेंट में इतने सारे टीम्स आ रही हैं, सो दैट मीन्स ईच एंड एवरी टीम इज इक्वली पोटेंट एनफ to end up becoming the champions and pose a serious and potential threat to the other. तो गलती से भी किसी टीम को, और खास तौर पे किसी प्लेयर को, आप राइट ऑफ ना करें। That is the thing. Correct, because when you talk about Sri Lanka, I understand that the previous year it was a shortest format, it was a T20, but that doesn't matter. They performed where it needed, and is bar home ground pe hai, they will have the full crowd behind their back, and absolutely I agree to that. And I'll come to my question. We did a team analysis session last time with a Pakistan fan, and he said that the 2nd September, the first game India versus Pakistan, it's not that kind of an important game, because we know, they know, everyone knows that India Pakistan will definitely qualify. Nepal won't, not to discriminate them, but still. But do you think 2nd September is more important, or 10th September is more important, or both, just for our self respect? What do you think on that? Point number 1. Point number 2, do you think India will make to the finals? Point 1 से मैं शुरू करूंगी। with all due respect, I will refrain from passing such extremist
डिसीशंस की कोई डेट इम्पोर्टेंट है या कोई डेट Correct. इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर नेपाल आई है तो इसका मतलब वो अपने टैलेंट के बलबूते पे आई है। उन्होंने खेल के जितने भी जो कट ऑफ्स या वॉट एवर द रूल्स एंड रेगुलेशंस आर, उन सबको क्वालिटी तरीके से फुलफिल किया है, क्वालिफाई किया है, तो जाके उनको ये रिकग्निशन मिला है कि वो आ जाके एशिया कप खेले। सो बाय नो मीन्स इट वुड, आई पर्सनली वुड से कि यू नो इट वुड बी फेयर टू से कि 2 सितंबर को ही हमें मैच देखना चाहिए, उसके बाद भी एशिया कप होगा पर हमें देखने की जरूरत नहीं है। नो, दैट विल बी एब्सोल्युटली अनफेयर। अगर आप एक जेन्युइन क्रिकेट फैन है, नॉट इंडियन माइंड यू, इफ यू आर अ जेन्युइन क्रिकेट फैन, तो अगर युगांडा और नाइजीरिया के बीच में भी मैच हो रहा है ना कहीं पे, तो आप अगर जेन्युइन क्रिकेट फैन हो तो आप ट्यून इन करोगे उस मैच में भी और बैठ के देखोगे, जानना चाहोगे कि कौन सा प्लेयर क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है, राइट? और अगर Yeah, किसी प्लेयर ने कोई रिकॉर्ड And बनाने just going बनाने off में topic, कामयाब हुए, यस I'm so प्लीज। sorry to cut you, Damini, here, but just going off topic from the Asia Cup, one of the fan has mentioned, and I missed out mentioning that in the comments, that recently, when you're talking about Nepal, recently UAE beat New Zealand, and that is one of the shocks. So you cannot just discriminate any small team. एग्जैक्टली, So this shows you a prime example. A team like New Zealand was defeated by UAE. Thank you so much once again, Priya, for this एग्जैक्टली, comment. But yes, so any good day, any team can defeat each other. absolutely. And like I also said a few moments ago, that you cannot and you should not, because it will be unfair. You have no right to write off any team. हर एक yeah. टीम आई है तो ईच एंड एवरी टीम, भैया इससे बेहतर एग्जांपल और क्या हो सकती है कि 1983 का वर्ल्ड कप, सबने कहा था ये तो वेस्ट इंडीज को ही जीतना है, वेस्ट इंडीज 2 बार की चैंपियंस, तीसरी बार हैट्रिक करने आई है, फाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई कर दी। इंडिया, इंडिया कौन सी टीम है, इंडिया की कोई औकात है क्या? और सबको पता है उसके बाद क्या हुआ था, कि आज तक उस 1983 के फाइनल को लेके चर्चा होती है, बहुत चर्चा होती है। और Yeah. वेस्ट इंडीज के तब के लेजेंड्स जो आज रिटायर कर गए हैं, इतने वर्ष हो गए हैं, वेटरन्स, वो आज तक कहते हैं कि उस दिन हमें, वी लर्नड दिस लेसन दैट नो मैटर व्हाट यू डू नॉट राइट ऑफ योर ओपोनेंट्स, no matter how apparently they are faring on papers. This is point one. And point two, well, I'm no clairvoyant. वो तो डिपेंड करता है, अगर इंडिया अच्छा खेलती है, अगर इंडिया अपना पोटेंशियल दिखा पाती है तो जरूर क्वालिफाई करेगी। एज एन इंडियन क्रिकेट फैन मैं चाहूंगी कि इंडिया क्वालिफाई करे, बट एज अ ट्रू क्रिकेट फैन आई वुड वांट the team playing the best version and the best form of quality cricket to qualify for the final. Yeah, and that second point from Damini came really, बहुत मुश्किल से उन्होंने वो बोला, we have to say it, but see, दिल क्या कह रहा है, इंडिया इंडिया इंडिया, दिमाग क्या कह रहा है, कुछ भी हो सकता है। So it's that kind of a format, but mind you, ODI और T20 अलग है, format mix मत करना। ODI में we have a good chance. Pritam, take it away to the next slide, please. Okay, and we are done with the fixtures, and we go on to the next slide. This is the form. Unbiased, being an Indian, we have tried to be as true as possible. Form देखे तो आप देखिए कि we have coming toward a win-loss-win form coming to the West Indies पे हम लोग जो खेले थे, playing a second B team if you can go to, but still you're talking about 6 teams equally competitive. We have marked our percentages where we feel that India, Pakistan are the favorites. Next in line is Sri Lanka, as you predicted as well, not to discriminate them. How much of a chances are you thinking? And going into one of the questions coming on from the comment section as well, which team looks more settled going into the Asia Cup 2023? If you can answer both these questions. Yeah, it's a very tough question. The second one, I would say, is a very, very tough question. Well, the analysis here, definitely winners. तो obviously India काफी ज्यादा रही है, परसेंटेज उनका काफी ज्यादा है, और second successful team, India. Actually, as I said, कि hierarchy सबको पता है, like those behind the curtains वाली discussions की सबको तो पता है hierarchy क्या है या कैसे हो सकती है, but you never know
because every day is a new day and every day something or the other uh, uh, कैन जस्ट हैपन. एक अजूबा हो सकता है, जैसे यूएई न्यूजीलैंड को हरा सकती है, तो वो क्या होता है, उससे उम्मीद मिल जाती है जो थोड़ी सी बैकवर्ड टीम्स है कि इसका मतलब हम भी ये कर सकते हैं. और जो टॉप टीम्स है उनको भी वो वेकअप कॉल मिल जाता है कि अरे बाप रे, इसका मतलब कंपटीशन टफ है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, कंपटीशन टफ है, तो हमें अपना गेम प्लान चेंज करना पड़ेगा. सो यस, थोड़ा सो डिफरेंट, थोड़ा सो डिफिकल्ट है इस पे कमेंट करना. एंड एज फॉर सेटल्ड इज कंसर्न्ड, देखिए यू नो एज अ ट्रू क्रिकेट फैन अगेन आई वुड से कि डेफिनेटली इंडिया ने तो बहुत ही बढ़िया अपना टीम सिलेक्ट किया है, अपना स्क्वाड सिलेक्ट किया है. जितने भी प्लेयर्स, ऑल द 17 players who have been selected, each and every player is beyond adjectives when it comes to talent, क्योंकि हर एक प्लेयर ने इतने बढ़िया तरीके से बखूबी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है. जब इंडिया को मैच जिताने की बात आई है काफी बार, हारने की कगार से खींच के इंडिया को जीत दिलाना, ऐसा भी बहुत सारे प्लेयर्स ने किया है जो प्लेयर्स अभी मौजूद है स्क्वाड में. सो हाँ, सो आई वुड से कि इंडिया डेफिनेटली लुक्स अ लॉट सेटल्ड, बट पाकिस्तान, वी कैनॉट राइट ऑफ पाकिस्तान एज वेल, क्योंकि पाकिस्तान ने भी एक बहुत ही बढ़िया स्क्वाड सिलेक्ट की है. और अभी रिसेंटली भी अगर हम देखें कि आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान का परफॉर्मेंस काफी इम्प्रेसिव रहा है. खास तौर पे लास्ट ईयर का T20 वर्ल्ड कप अगर आप उसको देखें तो लाइक कम बैक ऑफ द एजेस. फाइनल्स ऑफ कोर्स वो हार गए इंग्लैंड से, क्योंकि इंग्लैंड एक बहुत ही बढ़िया टीम है, पर किस प्रकार पाकिस्तान कम बैक की, जहां पे ग्रुप स्टेज से जिम्बाब्वे से उस तरह से हार के एक पॉइंट आ गया था कि बस एक मैच की जरूरत है एंड पाकिस्तान इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप. वहां से बाउंस बैक करके टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप फाइनल. So Pakistan That's an was showing कि immense नहीं, comeback. हम that's an immense comeback. And पाकिस्तान की भी अगर हम बात करें, so let's go back. Pakistan has always been a very quality team when it comes to cricket. Yes. Let's just keep aside the fact कि we are Indian cricket fans and वहाँ पे पाकिस्तान में भी there are cricket fans and we just love the India Pakistan clashes. इसको अगर हम थोड़ा साइड में रखें, तो I think as genuine fans we cannot deny कि Pakistan has from eras to eras and generations produced really quality talents. लाइक भयंकर भयंकर दर्जे के खिलाड़ी उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं. और अभी भी जैसे वो शाहीन शाह वाला थ्रेट तो अभी भी है. शादाब खान, आप नाम लेते रहिए भाई, यू पूरा दिन निकल जाएगा आपके बात करने में. तो वो भी एक बहुत ही सेटल साइड लगती है. एंड आई थिंक कांटे की टक्कर बिल्कुल होगी. इंडिया भी देगी, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश तो जरूर देगी. और अब तो भाई, अब तो यूएई से भी डर लगने लगा है कि सॉरी अफगानिस्तान से, कि भैया अब अफगानिस्तान आके क्या ना कर दे हमारे साथ. या वही है कि अगर इंडिया पाकिस्तान की बात करूं तो दो बॉक्सर लड़ रहे हैं. अगर सामने वाला बॉक्सर ताकतवर नहीं होगा, सेम लेवल पे नहीं होगा, तो क्या 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 फायदा, क्या मजा होगा. और इसलिए पाकिस्तान हम राइवलरी क्यों एंजॉय करते हैं, बिकॉज वी नो कि सामने वाला भी ताकतवर है और हम भी ताकतवर है. जब दो महाबली लड़ते हैं तो देन इट्स रियली इंट्रिगिंग कि भाई हु इज गोइंग टू बाजी कौन मारेगा. बट अब दामिनी, आई थिंक पहली बार ना मुझे बहुत सुकून मिल रहा है कि चलो कम से कम हमारे पास एक हल्की सी सेटल 11 है. पर एक और पंगा है जी, आज सेलेक्टर साहब ने बोल दिया कि केएल राहुल तो पहले मैच में नहीं होंगे. मतलब पाकिस्तान के साथ केएल राहुल नॉट देयर. तो हमने क्या किया, हमने थोड़ा ट्विस्ट लिया है यहाँ पे. ईशान किशन को ऊपर रख दिया. हम मिस्टर रवि शास्त्री के पॉइंट के साथ गए कि व्हाई कांट इंडियन बैट्समैन शिफ्ट देयर नंबर. क्यों कोहली 4 पे नहीं आ सकते, 50 की एवरेज है. क्यों शुभमन गिल 3 पे नहीं खेल सकते. इफ केएल इज नॉट देयर, ईशान किशन को कैसे फिट करे, सवाल ये है. और नंबर 8 पे वही शार्दुल खेलेंगे या नहीं. आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी पहले ये, और इस 11 से आप कितना अग्री करते हैं. दो सवाल इसमें. देखिए, ये 11 तो बहुत बढ़िया लग रही है जो अभी डिस्प्ले हो रही है. अब रही बात, हाँ दुर्भाग्य है कि केएल राहुल ओपनिंग मैच ही नहीं खेल पाएंगे.
उसके बदौलत देखिए बैकअप प्लेयर है संजू सैमसन, उनको बैकअप के तौर पे रखा गया है, और ईशान किशन को फिट करना, देखिए इट्स अ, आई वुड से इट्स अ वेरी टफ चॉइस, क्योंकि एक विकेट कीपर बैटर आपको चाहिए क्योंकि केएल राहुल नहीं है। तो फर्स्ट चॉइस अगर यहाँ पे ईशान किशन आते भी हैं तो मुझे लगता है उनको बतौर एज अ पिंच हिटर रखा जा सकता है। ओपनिंग स्लॉट अगर वो ओपनर के तौर पे आते हैं रोहित शर्मा के साथ, तो वो पिंच हिटिंग वाला जिम्मा उन्हीं पे होना चाहिए। और विकेट कीपिंग स्किल्स में आई थिंक संजू सैमसन वुड बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि संजू सैमसन इज अ मोर काइंड ऑफ अ सेटल्ड बैटर, मतलब वो अपना टाइम लेते हैं सेटल करने में, और एक बार उन्होंने टाइम ले लिया उसके बाद वो पिंच हिटिंग शुरू कर देते हैं। पर ईशान किशन का है कि वो कहते हैं ना कम शब्दों में बड़ी बातें करना, तो कम गेंदों में वो धमाधार वो चक्के छक्के मार के रन रेट को बढ़ा के फिर वो छोटा पैकेट बड़ा आ जाते धमाका। हैं। एग्जैक्टली, पावर प्ले में ईशान किशन कैन बी वेरी यूजफुल, पर अब ये भी है कि probably because still Ishan Kishan is growing, he's young and he still has that learning curve, उनको काफी कुछ सीखना है, तजुर्बा हासिल करना है। तो अभी भी अगर ऐसा हो जाए कि गलती से अगर पावर प्ले में विकेट गिर जाता है, ओपनर आउट हो जाता है, तो एक प्रेशर बहुत जल्दी अगर विकेट गिर जाता है कि सिंगल डिजिट्स में स्कोर है, एक विकेट गिर गया, एक ओपनर आउट हो गया, सो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हैवॉक। तो आई वुड से कि इट्स अ वेरी टफ कॉल। ईशान किशन भी फिट हो सकते हैं, संजू सैमसन जिन्हें बैकअप के तौर पे रखा गया है वो भी फिट हो सकते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों विकेट कीपर बैटर्स है, पर ईशान इज मोर ऑफ द बैटिंग ऑप्शन एंड संजू is more of the wicket keeper option, I would say. Number one. Number two, going with what Ravi Shastri says, that's Ravi Shastri is very beautifully highlighting what Rohit Sharma said in the press conference. And I agree to that totally. Ki he wants each and every player to bat freely and be comfortable in batting anywhere, not just Correct. stick to the कि अरे नहीं मैं तो ओपनर हूं तो मैं ओपनिंग ही करूंगा, आज मुझे कहा गया है कि नंबर 5 पे जाओ तो मैं नहीं जा सकता। आज जैसे शुभमन गिल को कहा जा रहा है कि नहीं आज शुभमन गिल को नंबर 6 पे आना है, तो उनको आना है एंड ही हैज टू बी ओके विथ इट। आज अगर हार्दिक पांड्या जो हमारे नंबर 5 या 6 के प्लेयर है उनको कहा जाए कि ओपन करो, सो हार्दिक पांड्या हैज टू बी ओके विथ इट। He shouldn't be given that option. He should be okay with it and he should go and express himself. क्योंकि इससे क्या होगा, तो आप ऑपोजिशन को चांस ही नहीं दोगे कि वो एक टेम्पलेट बना के या एक फिक्स्ड स्ट्रैटेजी बना के आए और उसको इजीली एक्सप्रेस कर पाए और आप उस पे इजीली सकम कर जाओ। आप मेंटल प्रेशर क्रिएट कर पाते हो दैट दे आर लॉस्ट फॉर वर्ड्स, दे आर डेस्परेटली सर्चिंग फॉर आंसर्स। So I think so I would say Ravi Shastri is absolutely correct here in saying कि क्यों भाई शुभमन गिल नंबर 3 पे बैटिंग नहीं करने आ सकता, या जैसे भी उन्होंने प्लेयर्स के नाम लिए कि वो चॉपिंग एंड चेंजिंग क्यों नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है, होनी चाहिए। Yeah, agreed. And जी, Pritam, yeah, absolutely agreed. And yes, जैसे कि now you were saying the fact that you want Sanju Samson in the middle order. So I just promote the players in the regular positions, having Shubman Gill at 2, Virat at 3, Shreyas at 4, Sanju at 5, and Hardik at 6. This would be your playing 11 if you have Sanju in the squad. So now my question for you, the major concern which I personally have, then I bring in Ravi Shastri once again into the picture. That is number 7, Ravindra Jadeja is your first and only left-handed batsman. Is that a huge concern, I would say? And I see that is the reason why we have gotten a new prodigy player, Tilak Verma, who is part of the squad. So we cannot play Tilak Verma right now because we need a wicket-keeping batsman. So the choice between Ishan Kishan and Sanju Samson, where Ishan Kishan is somebody you want him to give that power play, 10 overs. If we can stay the 10 overs, we can get a 75 to 80 runs in the top 10 in the power play. But he cannot bat, and I would say that when we're talking about flexibility, he struggles to bat in the middle stages. Number 3, 4, agar we would expect Ishan Kishan to bat at number 4. He's a left-hander. He can adapt to that.
But if he struggles and if he prefers at number two, and you want Sanju Samson at in the squad instead of Ishan Kishan, will a left-hander missing in that top six be a huge problem for Team India? लेफ्ट-हैंडेड प्लेयर जिसे हम साउथ पॉज कहते हैं इन अदर टर्म्स the missing of southpaws in the Indian team I think has been a bit of a problem. The be it left hand pacers or left hand batters क्योंकि हमेशा ही वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट गेम के या इनिंग्स के बीच पे क्योंकि उससे होता है कि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक आई थिंक इजी हो जाती है और बॉलर को भी जो है हर मौकाम पे हर डिलीवरी में हर ओवर में उसको सोचना पड़ता है कि अब तो दाहिने हाथ का आ गया तो दाहिने हाथ का मुझे ऐसे डालना है, अरे बाप रे अब तो बायां हाथ का आ गया। और कैप्टन को भी सोचना पड़ता है क्योंकि राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन लेफ्ट हैंड तो हमारे ऋषभ पंत दुर्भाग्य है कि अभी तक उनको इंडियन टीम में आने में काफी वक्त है क्योंकि ही स्टिल रिकवरिंग and we do wish him a speedy recovery, but he was like our best bet left-handed की ऑप्शन में, बट अभी जब वो नहीं है तो उनके बारे में हम बात नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेट। रविंद्र जडेजा की आपने जो बात की, आई वुड पर्सनली से कि लेट्स फेस इट, इंडिया की बैटिंग में अभी रिसेंट टाइम्स में हम ये प्रॉब्लम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी इफ इट इज इन देयर डे, इफ द टॉप ऑर्डर इज फॉल्टरिंग तो बहुत जल्दी टॉप 5 सिमट जाती है। सो वो रविंद्र जडेजा पे या हार्दिक पांड्या पे वो ओनस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली आ जाता है कि उनको हर बार आके बैटिंग संभालनी पड़ती है। एंड ऑल्सो टू आंसर योर क्वेश्चन प्रीवियसली कि नंबर 8 पे शार्दुल ठाकुर, I would say that would be too many all-rounders. Rather than having too many all-rounders, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि एक ही डिपार्टमेंट पे आप पूरा दारमोदार मत डालिए ना। अगर बैटर्स है, स्पेशलिस्ट बैटर्स आपके पास है तो आप लोग स्टेप अप कीजिए, आप लोग अपने आप पे वो दायित्व बोध लाइए कि बाकी के हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं हम उनको रेस्ट भी दे, क्वालिटी रेस्ट भी दे कि वो भी अपने आप को मेंटली भी एक रेस्ट दे पाए, कि स्ट्रैटेजी को स्टडी कर पाए, ऑपोजिशन को स्टडी करने का उनके पास टाइम हो कि वो भी आके फिर दे कैन जस्ट अटैक जब चेज करने की बात आई तो। एंड ये कंफ्यूजन अभी कंटिन्यू होगा क्योंकि अनफॉर्चुनेट कि केएल राहुल का नहीं होना, सो इट डज थ्रो ओपन कि ईशान किशन को आना चाहिए या संजू सैमसन को आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, और रविंद्र जडेजा को क्या हमें नंबर 5 या बियॉन्ड पे लाना चाहिए या उनको पहले लाना चाहिए। दैट कंफ्यूजन विल स्टिल रिमेन। And this shows how big a miss Rishabh Pant will be for the upcoming World Cup. He could have given us the answers in the middle order, being the left-handed, being the X factor. He would have been the missing factor, and he is the missing factor. As you mentioned, hope he has a speedy recovery. We can't wait for him to see back in the field in Indian conditions and Indian colors. But let's hope for the best. He comes back soon. Yes, Aaryan, you can go ahead. Yeah, good thing is he's on the field. That's a good sign. And whenever we say Rishabh Pant and we see this playing 11, it strikes a nerve for every Indian fan, because you see simple सी बात क्या है कि दूसरी टीम में कंप्यूटर एनालिस्ट लेके घूमती है और कंप्यूटर एनालिस्ट क्या कोई भी देख के बता देगा कि टीम में लेफ्ट आर्म स्पिनर भरो और लेग स्पिनर भरो और इंडिया को मिडिल ओवर में क्रैम्प करो। So that is the easiest strategy at the moment that the oppositions have against us. How are we going to counter that? Only time will tell. But जैसा कि टैगलाइन चल रही थी, सब आई नो जवाब मिलेंगे, जवाब तो कोई भी नहीं मिला उस सीरीज से, उल्टा सवाल हमारे लिए और खड़े हो गए वेस्ट इंडीज की सीरीज में। और हमने hopefully India do well. We can't comment on these scenarios as the team, the core group is back. So how does the core group go? And we can say more about it after the Asia Cup. तो मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, अगर ये सारे चल गए तो फिर लोग हमें गालियां देंगे कि तुम तो लेफ्टी कर रहे थे और सबने रन कर दिया और इंडिया एशिया कप जीत गया. So I'm not going to dwell too much into it, but
We put out a Insta story, Damini, and a lot of people had a lot of questions for all three of us, but mostly, frankly, to you. Uh, there you go. That is the first question about KL Rahul missing the match. He has a niggle and will miss. ये भाई साहब ने लगता है कोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, 2-3 गेम नहीं, एक ही गेम का बोला गया, बट सिर्फ एक गेम मिस कर रहे हैं, फैक्टर है. बट मेरा सवाल ये है कि will he be a bit jittery, will he be a bit cautious whenever he comes back, because he's coming back from an injury, no game time, straight away go and play Asia Cup, as far as KL Rahul is concerned. First of all, thank you to all the fans ये सवाल भेजने के लिए. I will try my best to answer them. हाँ, सबसे पहले तो हाँ, ये भी एक टेक्निकल एरर आई प्रिज्यूम इस रिस्पेक्टिव फैन ने कर दी है. 2-3 गेम नहीं, पहला मैच ही वो मिस करने वाले हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो 2-3 गेम्स मिस ना करे, बिकॉज ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर इंडिया एंड वी वांट हिम टू कम बैक एज फास्ट एज पॉसिबल. नंबर 1. नंबर 2 ये है कि आई डोंट थिंक वो कॉशियस या कॉन्शियस होंगे, because he has been a part of the international circuit for so long and he has contributed well for India. He has made records, he has broken records. So I think by now he knows how the pressure, how the situations, how the crunch situations are on the international circuit. And he has also unfortunately dealt with injuries. He knows कि injury के बाद आना है, कैसे आना है. So मुझे नहीं लगता वो cautious होंगे. He'll be just his own best self. All right, Pritam, take Agreed, the and next. we hope he makes a comeback soon. This question impressed me a lot. I know it's been going harsh, but we our hands in the selection committee's hands are tied. Yuzvendra Chahal once again missing out from an ICC. I would consider him missing out from the World Cup as well. If I'm being frank, he is not part of the World Cup. I think because वहाँ पे 15 member squad चाहिए, यहाँ पे 17 में उसका नाम नहीं है, 15 में तो होगा ही नहीं. But do you think he is being now affected mentally? Because if you most of the cricket fans, including both of us, have seen his Instagram story being a bit cryptic as well. But the thing is that, do you think it's been now going towards harsh dropping him? But as we are speaking about subcontinent conditions, extra spinner खिलाना जरूरी था और लाना जरूरी था instead of Prasidh Krishna. But what do you think in terms of being in his shoes mentally? क्या क्या असर पड़ेगा उसको? I have my deepest sympathies for युजवेंद्र चहल, क्योंकि उनके लेवल के प्लेयर को बार बार नजरअंदाज करना या लुक बियॉन्ड करना, डेफिनेटली somewhere it will, or it might, I would say, take a mental toll on him. Because देखिए, हर कोई आशा करके रहता है. हम आई थिंक वो तो बहुत ही ऊंचे लेवल के क्रिकेटर है. हम आप जैसे आम लोग भी जब एक कोई स्पेशल इवेंट आता है और हम जानते हैं कि सिलेक्शन, जैसे स्कूल में इमेजिन कर लीजिए ना, टीचर आती है, कहती है आज मैं क्लास का मॉनिटर सिलेक्ट करने वाली हूँ, तो आप भी उम्मीद लगा के बैठे रहते हो कि हाँ हमें भी सिलेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि टीचर आपकी इतनी तारीफ करती है. यू आर doing well in your exams, you're scoring well, you've behaved yourself well, and then suddenly the teacher says that yes, you are a good student, but I'm choosing your friend as the monitor. So yes, you feel good, but कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बुरा तो लगेगा. Let's face it, थोड़ा बुरा तो लगेगा कि आप भी उम्मीद लगा के बैठे थे. Then you start self doubting yourself, questioning yourself कि कहाँ चूक रह रही है मुझसे. You start to think low about yourself. So yeah, now the important thing is कि आप उसको पूरी तरह से हावी ना होने दो अपने आप पे. That's where the main challenge comes, and that's where you tend to prove yourself, or otherwise whether you are a quality cricketer or not, or a quality player or not. And for a sports person, it's even more important. So for Yuzvendra Chahal, I would say कि yes, probably it's a bit harsh on him. एंड हाँ, उनका बुरा लगना भी बिल्कुल जायज है, बिकॉज वो कह सकते बिल्कुल अपनी तरफ से कि वो काफी बार इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, अच्छा कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, इंडिया के लिए मैच विनर रह चुके हैं, और उसके बाद भी एक इतना बड़ा टूर्नामेंट आने वाला है और उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाना. सो
थोड़ा सा सेल्फ डाउट आने लगता है, थोड़ा सा प्रॉबेबली वो कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव थॉट्स आने लगती हैं कि वो मुझसे बेहतर है, मैं नहीं. बट युजवेंद्र चहल इज एन एब्सोल्यूट चैंपियन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. और बहुत ही मेच्योर्ड प्लेयर है, और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर और हार्ड वर्क करेंगे. दिस विल ओनली मोटिवेट हिम, and that day isn't far where he will again be seen in the Indian colors. Yeah, but a like few fans are in like, yeah, go ahead, go ahead. I was talking yeah, I about was that like, itself. यूसी भाई चेस और e-sports में करियर बनाएंगे, आईपीएल से रोजी रोटी कमाएंगे. So some fans are even commenting on his futures, which is surprising, but well, every fan is entitled to his own opinion. तिलक वर्मा, क्या बात करें इस बंदे की. He's come to light, and he came to light for me when he smacked us to all parts in Mohali. There was no, and he took his revenge from Arshdeep Singh, which was painful to see. But we appreciate a classy batsman. West Indies, में keeping the Ireland T20s aside, he's been absolute gold. Do you see him in the playing 11 or just with the squad for an experience? शॉर्ट आंसर दामिनी, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, जस्ट कि अगर जरूरत पड़ी तो तिलक वर्मा गेट्स इनटू द 11. It's a tough answer again. I would say शायद एक्सपीरियंस रखने के लिए ही उनको लिया जा रहा है, कि वो बैठे बेंच पे बैठे और अपने सीनियर्स को और खास तौर पे अपने रेगुलर्स को देखे कि कैसे खेल रहे हैं, वहां से सीखे, और फिर वो उसको अपने आप पे अप्लाई करे, उनको ग्रूम किया जाए, और फिर उनको ओडीआईज में डेब्यू करने का मौका मिले. All right. Thank you so much. And जैसे कि पहला और दूसरा questions already has been answered. You would prefer going with Gill and Rohit. Similarly, Rohit Sharma in the press conference said so. And also Shardul Thakur at number 8 is another question which has been answered before. This question has coming a long way. Is that the future of Bhuvaneshwar Kumar and Shikhar Dhawan in Indian colors? Do you see them making a comeback anytime soon or kabhi bhi? In terms of playing for India. Bhuvi has removed Indian cricketer, the word cricketer from his Instagram bio. We all know about that. But ये दोनों का future in Indian colors, and I would also add Ravichandran Ashwin टेस्ट साइड को छोड़ के, टेस्ट फॉर्मेट को छोड़ के, ओडीआई और टी20 में, these three players in Indian conditions, Indian colors in white ball format. अगेन टू वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स फॉर इंडिया, जिन्हें एक बार फिर से नजरअंदाज कर दिया गया है. शिखर धवन के लिए खास तौर पे भुवनेश्वर कुमार डेफिनेटली है, खास तौर पे शिखर धवन के लिए बहुत आई हैव फीलिंग्स फॉर दैट मैन. आई फील सॉरी फॉर हिम बिकॉज वो भी चर्चा का विषय बहुत रही है. रवि शास्त्री तक ने कहा है कि द मेजर डिफरेंस इन द प्रीवियस एडिशन ऑफ द वर्ल्ड कप वाज शिखर धवन, क्योंकि आईसीसी इवेंट्स में 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी जो हम जीते थे भैया, कैन वी फॉरगेट शिखर धवन का कंट्रीब्यूशन उसमें. आईसीसी इवेंट्स में हर बार शिखर धवन किस प्रकार स्टेप अप कर चुके हैं, इंडिया के लिए कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, वी कैन नॉट फॉरगेट. तो उसमें एक बार फिर से लुक बियॉन्ड हो जाना इज हार्टनिंग, इज डिसहार्टनिंग. बट अब आप मैनेजमेंट पे सवाल नहीं उठा सकते हैं. मैनेजमेंट पे सवाल उठाना आई डोंट थिंक इज एथिकल फॉर पीपल लाइक अस, बिकॉज वी आर नॉट इन देयर शूज, वी आर नॉट इन देयर चेयर्स. ये उनका प्रोफेशन है, तो वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या जज कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, वो वही जानते हैं. पर हाँ, बट आफ्टर ऑल प्लेयर्स लाइक भुवनेश्वर, प्लेयर्स लाइक शिखर धवन इतना कंट्रीब्यूट कर पाए हैं. दे आर our favorite players. We cannot deny the fact that they are our favorite players. So yes, it's a bit tough, but that's how it is. Yeah, and see, all right, Shikhar, Mr. ICC, we miss him. Bhuvneshwar Kumar contributed a lot to Indian cricket, and we respect them a lot. But transition happens in Indian cricket. हमें लगा था सचिन के बाद कोई नहीं आएगा, अब हमें लग रहा है कि कोहली के बाद कौन आएगा, अब हमें लग रहा है शुभमन गिल अगर आप प्रिंस है, और फिर हम पूछेंगे शुभमन गिल के बाद कौन आएगा. तो देखिए, ट्रांजिशन, परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन बीसीसीआई का भी नियम है, और हर पीढ़ी में कोई नया प्लेयर आएगा, और दैट इज द थिंग. एंड आई थिंक they have the IPL. Nothing is
closed, और जैसा रोहित शर्मा ने बताया, no door is closed, even Chahal can make a comeback. But I think we touched upon this briefly, but Indian squad is good, but aren't we depending on seamers? ये हम इंग्लैंड में नहीं खेल रहे हैं. Damini, for someone who loves pace like you, ये अटैक सीम फ्रेंडली हो रहा है. डू यू थिंक आवर पेसर्स विल बी मोर रिलायंट ऑन कटर्स rather than the seam deliveries when the ball is old? Because 10 ओवर के बाद गेम थोड़ा आसान हो जाता है. हाँ, लाइट्स के नीचे स्विंग होगा, बट अगर दिन में बॉलिंग आई तो हाउ डू यू सी देम यूजिंग द वेरिएशंस? क्या सारे कारगर साबित हो सकते हैं वेरिएशंस में? क्योंकि हर बॉलर के पास बुमराह वाली नहीं है, हर बॉलर के पास ही ऐसी वेरिएशंस नहीं है. तो हाउ डू यू सी इंडियन फास्ट बॉलर्स गोइंग इन श्रीलंका? देखिए, सबसे पहले तो ऑफ कोर्स स्पिनर्स का यूज ज्यादा होना चाहिए श्रीलंका में, ये पहली बात है. बट सिंस वी आर नॉट गोइंग इन विद टू मेनी स्पिनर्स इन द स्क्वाड दैट हैज बीन अनाउंस्ड, ऑब्वियसली द पेसर्स विल हैव द रिस्पांसिबिलिटी एंड द ओनस ऑन देम टू डिलीवर. अब आते हैं वेरिएशंस पे. तो देखिए, ये पूरा डिपेंड करता है हाउ द पेसर्स आर विलिंग टू यूज द वेरिएशंस विद रिगार्ड टू द बैटर्स. क्योंकि एक बॉल जब डिलीवर होती है तो सिर्फ एक बॉलर ही जानता है, मतलब कैप्टन को भी नहीं पता कि बॉलर क्या सोच रहा है या बैटर कौन से शॉट को अपने दिमाग में रख रहा है, क्योंकि प्रेशर दोनों पे है. ठीक है ना? प्रेशर बैटर पे भी है कि उसको स्ट्राइक रोटेट करके रखना है. ही हैज टू कीप द स्कोर बोर्ड टिकिंग, उसको रन रेट भी मेंटेन करनी है, उसको पावर प्ले पे भी एक रन रेट से स्कोर करना है. उसके बाद बॉल थोड़ी सी पुरानी हो जाती है तो उस बेसिस पे उसको अपने शॉट सिलेक्शंस करनी है. एंड सो द बॉलर हैज टू थिंक अ लॉट एंड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, कि ऐसे ही वो बॉल करे, क्योंकि रन जितने भी स्कोर होते हैं वो बॉलर के खाते में ही आते हैं. तो आई थिंक द बॉलर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, और खास तौर पे दोज नो बॉल्स और दोज वाइड. सो द बॉलर को बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में रखनी पड़ती हैं, कि एक तो लीगल डिलीवरी होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट. बॉल की हाइट सही होनी चाहिए, बॉल की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, बॉल का वेरिएशन सही होना चाहिए, और बॉल ऐसा होना चाहिए कि उस पर कोई रन ना बने. सो बॉलर पे तो मेंटल प्रेशर रहता है. या अब पेसर की बात करें तो पेस बॉलिंग इज एन आर्ट, इट्स अ ब्यूटिफुल आर्ट, और हमारे पास क्वालिटी पेसर्स हैं. हाँ, जसप्रीत बुमराह तो लीडर हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी पे नजरें नहीं रहेंगी. उन पे भी इक्वल नजरें रहेंगी, और उन पे भी इक्वल होप्स रहेंगे हम सबके, कि वो भी इक्वली स्टेप अप करे और डिलीवर करे हमारे लिए. या एंड एक सवाल है कि या प्रीतम गो अहेड. या गो अहेड. एक ही है, हम लोग दोनों ही सवाल पूछे जा रहे हैं. Go for it. Yeah, okay. This happens in every show, guys. You'll get used to it. कोई पूछ रहा है कि चलो अगर ये वर्तमान भी थोड़ा past, if our future looks like our past, then what happens? हमने इतने चेंजेस किए, हमारा कोर भी वापस आ गया, अगर यहां से भी ग्रुप स्टेज में कट लिए तो फिर वर्ल्ड कप में क्या? दैट इज बेसिकली द क्वेश्चन. दामिनी, I know this question is very hard to answer, क्योंकि हम ज्योतिषी नहीं है, हम फैंस हैं, हम फ्यूचर नहीं देख सकते. बट imagining the hypothetical scenario, if it happens, we don't do well in this Asia Cup, will we stick to this squad because we don't have many options in the World Cup? That's where the point lies. और मैंने अपने आई थिंक इतने देर के सेशंस में भी ये काफी बार हाईलाइट किया है दैट टैलेंट ऑफ पूल ऑफ टैलेंट इतना ज्यादा है, वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस. और अभी जो सिलेक्शन हुई है उसमें भी ज्यादा ऑप्शंस नहीं है. सो वॉट एवर यू हैव टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. ठीक है ना? एंड घूम फिर के बाद मेरे नजरिए से एक ही पॉइंट पे आती है कि आप जो भी प्लेयर सिलेक्ट कर रहे हो, देयर इज नो डाउट दैट ईच एंड एवरी प्लेयर इज एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड यू आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस. बट द फैक्ट इज, देखिए, एंड रिजल्ट यही है कि काफी लंबा अर्जा हो चुका है और
इन टूर्नामेंट्स में पहले एक टाइम था कि एटलीस्ट आप सेमीफाइनल्स तक जाते थे. अब तो हालत ग्रुप स्टेज में ही आ गई है, दैट यू हैव बीन रिड्यूस्ड टू द बिल्कुल ग्रुप बिल्कुल. स्टेजेस. सो इट्स नॉट दैट कि अरे नहीं यार वो ज्यादा टैलेंटेड है हम उसको लेंगे, इसमें उतना टैलेंट नहीं है. आप टैलेंट आप सब में बराबरी का है, बट इट्स अबाउट टाइम दैट यू केम एज अ यूनिट. You understood each other, you had the mutual respect, the mutual honor, the self belief. You understand your responsibilities, you recognize them, and you play quality cricket on your part and collectively, cumulatively. बिल्कुल. मतलब And वो रामायण से मैं एक वो सेगमेंट लेना चाहूंगी कि जब जाम्बुवन हनुमान जी को आके उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाते हैं ना, उनके सुपर फास्ट कि तुम ये हो, तुम्हारे पावर्स ये हैं. जब हनुमान जी अपने आप को सेल्फ दैट पॉइंट, आई वुड से इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन फॉर एवरीबडी कि सेल्फ डाउट, व्हेन हनुमान जी भी अपने आप को सेल्फ डाउट करने लगते हैं, सो सडनली जाम्बुवन जैसा कोई आता है एंड ही वर्क्स एज दैट कॉन्शियस, एंड यू सडनली गेट दैट मोमेंटम, यू सडनली गेन दैट मोटिवेशन, और उसके बाद तो पता है हनुमान जी क्या कर बैठे थे. सो Yeah. इंडियन टीम के लिए भी वो जाम्बुवन वो चाहे तो खुद बन सकते हैं, चाहे तो कोई मैनेजमेंट का आके वो बन सकता है, उनको याद दिलाए एक मिनट, कि वो एक किस मिनट, चीज के एक काबिल मिनट. है. अब रामायण की बात छिड़ गई है. आईपीएल का, सॉरी, ये एशिया कप कहाँ पे है सबको पता है. तो रेफरेंस बन रहा है, वो तारे सितारे मिलते हैं. या प्रीतम, गो अहेड. बिल्कुल, okay. बिल्कुल. ये तो बातचीत होती रहेगी, बट इट वाज, आई थिंक इट्स टाइम फॉर द कंक्लूजन. 1 घंटा 20 मिनट, एंड आई कांट बिलीव इट्स बीन, we have received so much of a response. It could only be possible because it's India. आज ही squad announced हुआ है. I am shocked but yet not surprised. We are very grateful that people has responded us so much. A big thank you for to Damini. Thank you so much for joining us. In Bengali I will say Ashanko Dhonnobad, just because धन्यवाद. you were there for 1 hour and 21 minutes. Thank you. Aryan, in case you haven't understood, it's a thank you in Bengali. But anyway, Yeah, I thank know, you I so got it. much. Thank you so much, Damini, for tuning with us. In one request, I would say, in one request, you have agreed to us with being in the live session, and we couldn't be more grateful. It was a wonderful session being with you. We spoke in 3 different languages, mostly concentrated in Hindi and English. But yes, we spoke a lot about India, ending with Ramayana. So yes, a lot of topics covered, a lot of things were discussed. Thank you so much once again. Thank you each and every people who have joined us in the comment section, who have joined us in the live session, have watched us at least for a minute or so. Thank you so much. In case you're watching it again, do not forget to subscribe the direct hit as well as the fifth umpire, because we will be covering we still have 4 teams left in the Asia Cup, and day after tomorrow we will cover up one of the hosting nations, that is Sri Lanka. As Damini said, do not underestimate them. They are the defending champions. We will cover a Sri Lanka day after tomorrow at sharp 9 p.m. Tune in that time as well. Till then, thank you so much once again, and we see you off. Thank you so much. Bye bye. Thank you so much for having me. Thank you.